Hello students, welcome. I'm Jyoti Rajput and today we will study a new topic. So here we are going to discuss the cell biology, the fourth unit, and the chapter name is nucleus, structure and function. Further, in this unit we will study this chapter and these are the following topics which we are going to complete. So here in this video we will start with the topic that is introduction. Whenever we observe a cell, here in the eukaryotic cell, the nucleus it is very much well organized, काफी well developed nucleus नजर आएगा हमको eukaryotic cell में. It means the nucleus it is going to have the nuclear membrane. Here, ये जो nucleus है, it was discovered by the scientist Robert Brown in 1831. And here, the nucleus, the word comes from the Latin language. Here we can say nucleus also, it means the kernel. And here this nucleus, it is always surrounded by a membrane. And here the membrane is going to be the inner membrane and the outer membrane. And here the nucleus, it is present in the eukaryotic cell. Here the main function of the nucleus is first of all it is the one which is controlling all the activities which is taking place inside the cell. So here we can say the nucleus is the core of the cell and controls the metabolic processes. Here further when we study about the nucleus जो है वो ज्यादातर सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है. So it always usually lie in the center of the cell. और जहाँ तक शेप की बात करें न्यूक्लियस का जो शेप है काफी हद तक स्फेरिकल है और वो काफी वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल को जो है कंट्रोल करके रखता है. Further, when we observe the nucleus, inside nucleus, there is presence of the nucleic acid, you can say the DNA, and along with that, there are some proteins. Here we call them histone. So DNA जो है वो हमेशा histone protein के साथ ही attached होता है. This is called as nucleoprotein. The DNA it is negative charge and the histone it is positive charge. That is why both of them they always remain together. तो ये जो दोनों कंपोनेंट है हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज है इट इज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप और हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव अमाइनो एसिड प्रेजेंट है लाइक द arginine and the lysine. So these components are very much essential which is always present inside the nucleus. Here, when we talk about the scientist Valdeir in 1888, he observed that the DNA it forms a structure that is called as chromosome. So जब भी DNA condensed form में नजर आएगा, it is going to take the shape of this chromosome. So ये जो न्यूक्लियस है suppose this is the nucleus and this is the cytoplasm. ये जो nucleus है it always has the genetic material the DNA. It is going to have the RNA also. So here when we talk about the structure, here the genetic material it is always in a multiple and it is long, linear in shape and thread-like bodies it is seen, which is going to have the histone proteins. सो डीएनए जो है वो कभी कभी आपको क्रोमेटिन फॉर्म में नजर आएगा जब सेल डिवाइड नहीं करता है और कभी कभी जो है आपको जो डीएनए जो है आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर आएगा जब सेल डिवाइड करता है. सो हियर द डीएनए इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म. या तो डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में नजर आएगा या तो फिर डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर आएगा. व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड तो डीएनए जो है आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर आएगा और जब सेल डिवाइड नहीं करता डिवीजन नहीं करता तब क्रोमोसोम जो है आपको आई मीन जो डीएनए जो है आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में नजर आएगा. Further, ये जो nucleus present है, the nucleus it has a double membrane that is called as nuclear membrane. This nuclear membrane is very important. It is the one which is separating the cytoplasmic content which is present outside the nucleus and the genetic material. So we can say ये जो nuclear membrane है ये separate करता है cytoplasm को और the genetic material DNA को. And in the nuclear membrane there is presence of some pores. These are the minute pores. So ये nuclear membrane है
and here these are the minute pores which are present. So अगर कोई RNA का formation होता है, so here it comes in the cytoplasm through these minute pores only. You can say nuclear pore also. So here in this diagram you can see the nuclear pore. अगर कोई RNA present है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, तो वो साइटोप्लाज्म में आ सकता है by the nuclear pore only. So इस तरीके से जो है exchange of material देखने मिलेगा from cytoplasm to nucleus and from nucleus to cytoplasm by the help of these nuclear pore only. फर्दर जब हम और डिटेल में स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेल साइकिल, ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन. Further, now we will talk about the nucleus shape, size, number and position. Nucleus जो है, there is going to see number of differences in different types of cell. So it is going to vary in shape, size, position in different types of plant cell also and animal cell also. So first we will discuss about the shape of the nucleus. जो shape होगा nucleus का, it is going to depend on the shape of the cell. लेकिन कोई कोई न्यूक्लियस होते हैं जिसमें irregular shape भी नजर आ सकता है. यूजुअली जब भी हम देखते हैं न्यूक्लियस का जो शेप, इट इज ऑलवेज राउंड इन शेप, बट अकॉर्डिंग टू सेल इट कैन वेरी. जैसे कि जब हम इन ल्यूकोसाइट्स को देखते हैं, दीज आर द WBC. हियर यू कैन सी देयर इज गोइंग टू बी वेरिएशन इन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं. हियर यू कैन सी द राउंड शेप न्यूक्लियस. यहाँ पर इफ वी सी द आरबीसीज व्हेन एवर द आरबीसीज आर फॉर्म एट दैट टाइम द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. लेकिन जब आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं, द आरबीसीज इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड आउट. सो जो मैच्योर आरबीसीज होंगे, आर एर्थ्रोसाइट्स also you can say they are the cells which don't have nucleus. Here, when we talk about the paramecium, they are going to have two nucleus. एक होता है macronucleus और एक होगा micronucleus. Here in this cell, you can see there is a beaded shaped nucleus present. There are some cells which are having number of nucleus, so we call them polynuclear cell. Here in this cells you can see यहाँ पर जो है, here you can see there is a lobe shaped nucleus, so we can say lobular nucleus is present. Here is the uh, you can say the horseshoe shaped nucleus is present, and here in this diagram you can see the S shaped nucleus is present, and in this diagram there is a bean shaped nucleus is present. So according to cells, variation in the न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. सो किसी किसी सेल्स में ओवल शेप आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, किसी किसी सेल में जो है आपको डिस्क शेप न्यूक्लियस नजर आएगा, किसी किसी सेल में जो है elongated शेप में न्यूक्लियस नजर आएगा, like in columnar cells. Here there are lobular shaped nucleus present in the WBCs. There is horseshoe shaped nucleus present in the monocytes. There are branch shaped nucleus present in the labyrinthine nucleus of platyphylla. स्पिंडल शेप न्यूक्लियस भी नजर आता है, दैट इज इन द स्पर्म. सी शेप न्यूक्लियस आपको नजर आएगा वॉर्टिसेला में, एंड पायरिफॉर्म और यू कैन से द पियर शेप न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन द पेरिमीशियम. So there is going to be the difference in the shape of the nucleus as there is going to be difference in the cell. लेकिन जो जेनेटिक कंटेंट होगा, जो जीन्स प्रेजेंट होंगे डीएनए में, इट इज गोइंग टू बी द सेम, वो अनअल्टर्ड रहेंगे. Now we will talk about the size of the nucleus. जो size होगा nucleus का, which is present in the cell, it the nucleus always occupy about 10% of the cell volume. कहीं कहीं किसी किसी cells में जो है, जब हम diameter की बात करते हैं, the nucleus vary in size from about 3 micrometer to 25 micrometer in diameter. So depending on the cell type and content of set of chromosome. Here, the size of the nucleus, it is always directly proportional to that of cytoplasm. मतलब जितना साइटोप्लाज्म का साइज होगा उतना ही न्यूक्लियस का भी साइज होगा. जब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की, आर हर्टविग की, he has given a formula for the deduction of the size of the nucleus of a particular cell. Here the formula is, here is the nucleoprotein, or you can say nucleocytoplasmic index. Here
it is nuclear volume upon volume of cytoplasm minus nuclear volume. So this is a formula which has been used. So एक ratio नजर आ रहा है between the nuclear volume and the volume of the cytoplasm. ये जो है formula, it has been used so that we can express numerically by the cytoplasmic index. Here now we will talk about the number of nucleus. Usually किसी भी cell में हम देखते हैं there is presence of one nucleus. लेकिन कहीं कहीं सेल्स में आपको वन से ज्यादा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी नजर आएंगे. अगर कोई सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो दीज टाइप्स ऑफ सेल आर कॉल्ड एज यूनी न्यूक्लिएट सेल. कोई कोई सेल्स होते हैं जैसे कि पैरामीशियम, देर आर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, एक होगा मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा होगा माइक्रो न्यूक्लियस. सो ऐसे सेल्स जो है वो कहलाए जाएंगे बाय न्यूक्लिएट सेल्स, जैसे कि पैरामीशियम में. और कोई कोई सेल्स होंगे जहां पर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, हियर देयर आर नंबर ऑफ न्यूक्लियस में बी प्रेजेंट. सो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज पॉली. पॉली मीन्स मैनी, पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स. सो अगर पॉलीन्यूक्लिएट सेल प्लांट में नजर आता है वी कॉल देम सिनोसाइटिक सेल. और यही कंडीशन अगर एनिमल सेल्स में नजर आती है, सो वी कॉल देम सिनसाइटियल सेल्स. Further, now we will talk about the position of nucleus. Here जो position होगा nucleus का in the cytoplasm, it is going to vary. Usually cell के center में ही nucleus present होता है, which is having a nuclear membrane and it is present in the cytoplasm. लेकिन जब हम दूसरे cells की बात करते हैं, like for example we take a plant cell. Plant cell में vacuoles, it occupies about major part of the plant cell. About 80% जो है volume this vacuole it is going to occupy. So इसी के ही वजह से जो न्यूक्लियस है वो एकदम पेरीफेरी में आ जाता है, eccentric आ जाता है. So here the center of the cell it is often occupied by large vacuole. The nucleus it is pushed against the cell wall, जिसकी वजह से here it is assumed that it has a kind of a elliptical shape. Here when we talk about the leukocytes, the WBCs, you can see the multi-lobed nucleus it is present. Here you can see the bilobed, here you can see here many lobes are present, multi-lobed nucleus it is present in the WBCs. ये सारे के सारे जो है these are the example of the WBCs. Here there are cells like when we talk about the adipose site cells. Suppose हमने ये जो है adipose, here we will take a cell that is adipose site. Adipose cells जो होते हैं here major part it is occupied by the fat. Okay, so जिसके वजह से जो nucleus है it is present in the periphery, it is present in the eccentric. So here that is why in adipocyte cells the nucleus it is at the periphery, and there are some of the glandular cells where the nucleus it is present at the base region. कोई कोई cells होते हैं जहां पर जैसे muscle cell the nucleus it is at the periphery. So here this is how the variation of the nucleus it is present. And here the video ends, and thank you very much.